मैं आमंत्रित करूंगा श्री आर.एस. गोदियाल, जो कंसल्टेंट हैं हमारे उपासक में और बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। आपका टॉपिक इकोसिस्टम फॉर एंटरप्राइज डेवलपमेंट सब कंपोनेंट 2.2 सपोर्ट टू फाइनेंशियल सर्विसेज ये रहेगा। इसमें एक्सपर्ट्स कमेंट के लिए मैं इसके बाद में सेशन के बाद में आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मनोज कुमार शर्मा, who is working for Microsave under Bill Gates Melinda Foundation, and Girija ma'am, who is connected, who is present but virtually. Mr. Godiyal, I would like to come upon this stage. और respected committee coordinator IFAT, मीरा मैम, IFAT टीम से श्री जैम साहब, श्री श्रीकांत सेठी साहब, and yes, of course, Girija madam, who is connected online. The dignitaries visited to join this workshop from districts, CDO sir, PD sir, APDs, and yes, of course, other dignitaries who has come from outside. I can see them here. And my colleague from UpaSac, staff of UGBS, USRLM, are very welcome to this second day's session of UpaSac discussion. As you people are learning since yesterday about this UpaSac, you must be intending to know what UpaSac is and what actually does UpaSac. So I will be describing it in detail. My name is R.S. Godiyal. मैं बैंकिंग सलाहकार हूँ उपासक में, एक्स बैंकर हूँ, SBIM हूँ और जनवरी 2018 से इस उपासक से जुड़ा हुआ हूँ। उपासक विच इज एब्रिविएशन ऑफ उत्तराखंड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कंपनी। एक्चुअली इट्स अ कंपनी registered under section 8 of Companies Act 1956 and Revised Act 2013. It's a government company in that perspective that in the board of directors of this company are the senior functionaries of Uttarakhand government and mainly performing the work of till now, yes, of course, of IFAT. It was incepted somewhere in 2006 on 29th March. And the very purpose of this company's formation was that this IFAT started its first project with the name of ULIF, which was for a period of almost 8 years, started somewhere in 2004 and was up to 2012. But why? Because the main objective was this financial inclusion, and that was to be implemented with some institution. So it was thought over that there should be a company, there should be an institutions which can implement this as a component of the IFAT. So in 2006, this company came into being and it started functioning as a component of this IFAT. So the company, as I have told you, that it started in 2006 and it has presence
in all the 13 districts of Uttarakhand. The objective of UpaSac is financial services, business development, insurance services, and capacity building. Financial services include वित्तीय साक्षरता products of credit and deposit, जो कि विभिन्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके बारे में जो है अपने टारगेट ग्रुप्स को मेनली वाई बिकॉज दिस IFAT was extending its financing, its loaning to the groups. So it was necessary to educate the people and to increase their awareness about the financial products. So in order to make them aware about the products, it was necessary to impart trainings to those target groups. Business development was also there, and for that purpose credit linkage was to be done. So extending the credit loan facilities by way of term loan, cash credit loan, KCC, this extended its services. Next was risk coverage, and risk coverage was to be done through insurance. So making aware about the insurance products, it was thought necessary that insurance should also be got done of those people who have been extended this financing. So insurance risk covering was also there. And next was capacity building. If suppose the target group members are going to start their ventures, they should be enabled, they should be made aware how to start their ventures. So their capacity building, skill development was also considered to be improved. As regards the questions of UpaSac structure, UpaSac at the apex level, there's board of directors. Then next to the ladder is chairperson, presently additional chief secretary, rural development is there, is the chairperson. Then managing director, additional secretary, rural development, government of Uttarakhand. Then chief executive officer, joint director, state DRDSL, and consultant banking, myself, XJGM, SBI, and chief vigilance officer of bank, consultant company law, and rural finance coordinators at the grassroots. Again, in this REAP project, additional rural finance coordinators would be there. UpaSac works over the years. As I have told that it came into being in 2006, and it was associated with ULIF, first project of the IFAT. So it associated with that project from 2006 to 2012. It covered initially 5 districts of the state, which were Almora, Tihri, Chamoli, Bageshwar, and Uttarkasi. Block work covered 17, SHG 3,560, and households were 42,690. Credit linkage 97.77 crore credit linkage was given. Next project came into this force from 2013 to 2019. Initially it was up to 2019, and thereafter it was extended for further 2 years. That means up to 2021. That time 11 districts were covered and 44 blocks were covered. 10,563 SHGs were covered, 161 LCs were covered, and 1,11,642 households were covered. Credit linkage made 233.20 crore as against the target of almost
220 crore or so. And UpaSac not only achieved the target allocated to it, but also surpassed it by many more percentage. That means almost 150% it achieved its target. And it's also mentionable here that keeping in view the performance of UpaSac, the then additional chief secretary, who was by the way CPD, by the way commissioner of RD also, she asked UpaSac to extend its services to USRLM. And since though 2019, February 2019, UpaSac is extended its services to USRLM also. For the sake of knowledge, since UpaSac extended its services to USRLM also has been performing USRLM has also been performing in a very nice way. And now, why? Because this REAP project is going to be almost started. So its role in this REAP project is also a vital, it has to play. Since yesterday you must be listening that almost 50% of the project budget is to be achieved by UpaSac by way of credit linkage of the groups. So that way it has to play a vital role in this project. In this REAP project, UpaSac's role are partner agency to facilitate financial services for the different target groups. Next is financial services strategy will dovetail with livelihood diversification, enterprises financing and CBO business financing, and facilitating loan to 5,60,000 households of SHGs, PGs, DOs, and 10,000 enterprises, livelihood collectives and value chains, LCs, FPOs, whose detail is given in the manual of the REAP. UpaSac target in REAP is 13 districts have to be covered and 95 blocks are to be covered. Credit linkage of 5,60,000 households. Apart from that, 10,000 entrepreneurs are also to be financed, which comprises those returning migrants who have returned back during the period of COVID, as also nano, micro and small enterprises who would be setting up their units, who will be setting up their enterprises at the blaze. They are also expected to be financed by UpaSac with the credit linkage from the banks. Budgetary target of UpaSac in REAP is bank loans to SHG enterprises, LCs, BOs and FPOs, that is to the tune of 1,378 crore. Risk comfort mechanism for financial nascent LCs, FPOs enterprises is 5 crore and matching grant of rupees 10 crore. This risk comfort mechanism I would like to explain that generally the banks hesitate to extend finance to the startups, to newcomers in the this industry. So, to remove their hesitance, it has been decided by the project that a sum of rupees 5 crore would be there,
and whosoever is extending finance to the new startups, they would be given a sort of guarantee that, keeping in view, if suppose 100 persons have been extended finance and 10 goes bad, 10 people's account turn into NPA, those would be guaranteed. Yes, of course, a model would be developed how this guarantee would be given, but up to some extent, this amount would be covering the loss of the banks. And definitely then they would not be hesitating in extending finance to the enterprises. Like Government of India, MSME Department, MSME Ministry of Government of India has created CGTMSE Fund, Credit Guarantee Trust Fund for the enterprises, for the small and micro enterprises, for the MSME sector, that if suppose the loans goes bad, loans turn into NPA, so up to some extent the loss could be made good from that amount. Presently, the bankers rely on it and recover their losses from that amount. Flatly, they submit their claim with the CGTMSE, and as per the prescribed norms of the CGTMSE, they claim the loss which they have incurred by way of financing to the units. So, on the same lines, this fund has been created by IFAD in the name of first lending risk finance of rupees 5 crore, and next is matching grant of rupees 10 crore. Again, this is an assistance from the side of IFAD to the enterprises, to the new entrepreneurs who would be coming to start their enterprises. If suppose they don't have their own money to invest in, to bring in like margin money, as bankers generally ask for the margin money contribution from their side to be coming in that project. If they are not in a position to provide that margin money out of this fund, yes, of course, again a model and a scheme is to be devised how this scheme would work and what would be the mode. It's not necessary that it would be extended in the shape of margin money. It may be in the shape of patient capital. Again, patient capital is what? Some part of the project. If suppose it's a 100 rupees project and 50 rupees has been extended by banks as a loan and 30 rupees given out of this patient capital, it would also be like loan which would be on cheaper rate of interest. Presently, if suppose banks are extending their financing on the rate at the rate of 12%, we would be providing it at the rate of 6 or 7%. So that would be the interest burden on the borrowers would be lesser as a whole. And remaining part, 50 rupees from the bank side, 30 rupees from the IFAD side, and 20 rupees would come from the entrepreneur side as margin money. So, idea behind that is the whole, if suppose the rate of interest is calculated on the amount of 80 rupees, that would be 12% charging by the banks and 6% charging on the patient capital, which would be, yes, of course, charged by the banks, but it would be shared in between that financing institution with whom we would be having an arrangement to extend that facility, and in between that institution as also UpaSac as our administrative cost. But again, it would this would depend on what scheme is devised by us. Next would be equity fund financing. Equity fund, as you know,
that if suppose bank has received a proposal from entrepreneur side of rupees 100, and he says that at least 30% capital has to come in from borrower side, and borrower is not in a position to bring that amount, then equity financing, equity means that portion of equity that has to be brought in by entrepreneur, that type of financing is made done by banks, some institution, private institutions, or this out of this 10 crore we may divide that. So we have options in what type of financing we would be done out of this 10 crore which we are having with us from the project side. So this we would be having discussions with the financial institutions, and after entering into a memorandum of understanding, this scheme would be implemented. Next role UpaSac will be playing is training and capacity building. As I have told that in ILSP, UpaSac has not been doing only financing work but also making aware about financial literacy to the target group. Likewise, here also we have to we have to impart many trainings to the target groups, to our workforce, to our staff. So we would be imparting many trainings like orientation training, capacity building, enterprise financing, cash flow and NPA management, bank product, processing appraisal, insurance product and claim settlement, government loan schemes, MIS training, digital financing services, financing of livelihood, collective FPOs, and the participant would be, as I have told, that staff is to be made aware that what type of role we are going to play in this scheme of REIT. Secondly, our people would be extending their services like Bank Sakhi, Bank Mitras, SHGs, and other people of other departments, bankers itself. Why? Because it's not necessary that whatsoever scheme we would be approaching to the bankers, they would be ready. Yes, of course, we are agreeable to extend your schemes. They would definitely require first made aware about the schemes, about the project, then only they would be ready for that purpose. The stakeholders, again, as I have told, project partners, whosoever are our project partners, they are also to be made aware about the program, about the project, and district and block officials. What outcome we expect from them after imparting the training are they would be knowing about the REIT project, they would be oriented about the roles and responsibilities to have been carried out by those, and financing to target groups, banking products, and knowledge about MIS, sharing of reports, knowledge of digital financing, knowledge of working capital, term loan, and other banking products. So that way we would be literating them, we would be imparting knowledge to them. Next is credit linkage. How we would be achieving that target of credit linkage of rupees 1378 crore is by extending finance to CBOs, means
cluster-based organizations, SHGs, PGs, BPGs, CLF, LCs, FPOs, individual enterprises, CCL. It is expected that 47,000 SHGs, which would be made by SRLM, they would be extended finance. Yes, of course, some of them have been already given, but the remaining one would be given financing, or those who have been given first dose or second dose, they will be given third dose, and thereafter, if suppose they have they have improved their capacities, they are in a position to run their business individually, separately, without any assistance, they are also to be extended finance. 601 LCs and CFL LCs, 10,000 enterprises, as I have told just now, those 10,000 enterprises are also to be set up, and they are to be given finance by way of working capital, term loan and CCL. This CCL word is used generally in government schemes, in SRLM financing, and yes, of course, we were using it in our that UpaSac financing. The cash credit loan. CCL means cash credit loan. Cash credit loan comprises a portion of term loan and working capital also, where some portion of loan is given for meeting out their working capital requirement to bring raw material, etc. And a portion of that is given for purchasing the equipments, capital expenditure, etc. So the combination of that working capital and term loan is called CCL. Second term which is used is term loan. Term loan means generally for a longer period. Working capital is given for a period of 12 months, and thereafter it is supposed that they would be, it would be reviewed, it would be renewed if they are requiring this to continue with it. Otherwise, they are supposed to close it within a year period. I am talking about general cash credit loan, general working capital loan. I am not talking about CCL, which is given from the USRLM side or from the UpaSac side, which has been given till now. I am talking about general loan which banks extend to the borrowers. In case of term loan, it is given for a longer period, say about 7 years or 10 years, and repayment is fixed in that case. Repayment is fixed on the basis of the repaying capacity. As yesterday someone was raising a question about break-even point. Bank itself decide about break-even point, and thereafter only fix the repayment schedule. When unit would be in a position to generate something, to generate income, then only repayment is fixed. And if suppose one is not about to break even, it is not only denied loan, but it is not considered a bankable proposition. So break even is the most important part of bank financing. So that are the types which bank generally gives to the borrowers. And one more type of financing we were making, that was KCC, Kisan Credit Card. This is determined on the basis of land holding to the farmers. That means whatsoever land holding one is having, a farmer is having, if suppose one is having 10 acres of land, its KCC would be determined on that basis, and what crop is growing on that land holding. If suppose some commercial crop is growing, its rate are different for working out the amount of loan.
If suppose something else is being grown, its rate are different. I mean, each and every crop has its own rate fixed by the bankers, fixed by the even district consultation committee जो होती हैं, उनके द्वारा ये रेट डिसाइड की जाती हैं, नबार्ड के द्वारा डिसाइड की जाती हैं. Based on that, this scale of financing is determined, and on the basis thereof, the limit is determined. So, on the basis of KCC, they are given this credit for meeting out their, inputs cost, their working capital cost, their implements cost. So, this type of financing also we make. As regards the question of the CCL of SRLM and UpaSac, which we have been making, CCL in that case, it's not basically for the first dose and second dose and third dose and later on the further financing. It depends. First, we would be considering that it should come from the SHG side, and SHG should be found by USRLM based on their Panch Sutra, etc. And if they are following those Panch Sutra, then only they are asked to open their account with the banks. They are given loan as per the directives of RBI, that they will be given a limit of rupees 6 lakh, and a DP would be decided for the first dose, that is first year, it is 1.50 lakh, which has recently been revised. Earlier it used to be 1 lakh. Second dose, again it's for 3 lakh, and third dose for 6 lakh. And if suppose it is to be further given, so it can be up to any extent, depending upon the MCP which they would be producing to the bank, and depending upon the viable project again. If it is not viable, economically viable, bank would not be extending any sort of financing. But yes, of course, if it is viable proposition, bank would certainly be extending their financing to their purpose. So, in case of first dose, it's not necessary that the whole amount is to be used for productive purposes. In the first dose, it is 50%, which is to be used for productive purposes, so that they may generate some income, and out of that income they may make repayment to the bank. In case of second dose, it is supposed that 75% should be for productive purposes, and rest they can use it for their consumption purposes. In the third dose, they can use 85% of this loaning for productive purposes, rest they for consumption purposes, and thereafter the whole amount would be given for project specific. That means for end use of purpose is to be ascertained. If they are not going to tell, they are not going to give a project for the whole amount they would be using, they would be taking as loan, then bank would not be extending any financing. So purpose has to be there, and it should be productive purpose, not for other purposes like gambling, etc., or marriage of its sons. It's not for that purpose. It should be for productive purposes. So that way this financing goes on. Again, we will be making this financing and meeting out our this target from convergence also. And this convergence is to be made from the government schemes also, like line department scheme, be it Chandra Singh Gadwali's NCDC 0% loan scheme, Mudra loan scheme of Industries Department, Agriculture, Horti, Veterinary, Fisheries Department schemes, and bank loan for valuable chains. All these would
make us, enable us to achieve this target. For achieving this target, until and unless we won't be getting cooperation from the line department and especially from the administrator side like CDO sir, PD sir, EPD sir, so it would be difficult for us to achieve this large target. But I am very much sure that with the help of UGBS, with the help of USRLM, we would be in a position to, and with the help of all the departments as I have told, and with the guidance of CDOs at the field level, PDs at the field level, and APDs, DMMs, DPMs, we would be in a position to achieve this target. With these words, I would again like to show a video clip describing about the contribution of each and every one and how it enables to fulfill the target, to achieve the target. Some problems are just too big and too complex for any one person to handle alone. For these challenges, we need to collaborate. But what does that mean? Collaboration is more than just working together with others. To really work together effectively, especially when resources are tight, we need to invest in good collaboration. Good collaboration means sharing the responsibilities, risks, benefits, and the credit. Good collaboration also means that everyone who is involved works toward a common goal. To do that, we need to know our limitations. Leave our ego at the door. Keep an open mind. Be physically and mentally present. Ensure everyone has an equal voice. Invest trust to get trust. Step out of our comfort zone. Value each other's contributions. There are many benefits of a good collaboration, such as engaged and empowered members, increased capacity to solve complex problems, strong relationships grounded in trust, honesty, and respect, efficient use of resources, and a greater overall impact. Remember, we are stronger when we work together. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. With this, thanks to all, thanks a lot. मेरा नाम मनोज शर्मा है। मैं एक संस्था माइक्रोसेव से और इस प्रोजेक्ट के लिए हमको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और ऑफ कोर्स रीड प्रोजेक्ट में आईफैड और उत्तराखंड समिति इन लोगों ने आमंत्रित किया है कि इसमें हम लोग अपना योगदान दें, जो भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग स्ट्रेंथ्स है उनको लेकर के आए। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर द इन्विटेशन हियर टू कम एंड स्पीक। आई थिंक गुडियाल साहब हैज कवर्ड जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के, कि प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, कैसे लिंकेजेस लाएगा, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या बैंकिंग सर्विसेज कैसे लाई जाएंगी। उन्होंने उस पर काफ़ी बात करी है और ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन होंगे तो विल बी वेरी हैप्पी टू वे इन विद हिम और उनके साथ उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा एट अ मोर स्ट्रेटेजिक लेवल, एट अ सॉर्ट ऑफ अ हायर लेवल, कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, कहाँ पर जा रही है मार्केट। तो ओके, थैंक यू।
तो अगर आप देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं ये पूछूं कि पिछले हफ्ते या 15 दिन में आप लोगों में से कितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट्स करी होंगी, हाँ? तो काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ डिजिटली पेमेंट्स करी होंगी, है ना। और अगर ये 5 साल पहले का हम सिनेरियो देखें तो डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल नहीं हो रही थी, कोई भी डिजिटली हम लोग का इंटरफेस ज़्यादा नहीं रहता था, अनलेस आप बहुत ऊपर के सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे। तो एक तो जो चीज़ है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है, चाहे वो महिलाएं हों सजी की, चाहे कोई हो, उनका डिजिटल फुटप्रिंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। अगर आज की तारीख में आप देखिए तो गूगल पे है, पेटीएम है, ये लोग कुछ पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं। आप उनकी पेमेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं, आप जाते हैं देखते हैं कि एक QR कोड रखा हुआ है दुकान पे। कल मैं गया था एक केमिस्ट की शॉप पे, तो मैंने उससे पूछा कैश कितना आता है और ये QR कोड से पेमेंट्स कितनी आती है, तो बोलने लगा कि ज़्यादा QR कोड यूज़ होता है। तो क्यों ये कंपनीज कर रही हैं? बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स आर बीइंग मेड इन इंडिया। फ्री में सर्विसेज दे रही हैं, उनका तो पैसा लग रहा है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, UPI से कनेक्ट किया है, पेमेंट सर्विसेज दे रही हैं, बीच में कभी फेलियर होता है तो आप उनको अप्रोच करते हैं, वो रिड्रेस करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपनीज डेटा इकट्ठा कर रही हैं। जब मेरा और आपका डेटा उनके पास रहेगा तो वन ऑफ द फर्स्ट यूज केसेस विल बी क्रेडिट, है ना। अगर उनको ये पता हो कि मैं जा करके इस दुकान पे शॉपिंग करता हूँ, 5,000 रुपये का सामान खरीदता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता हूँ 3,000 रुपये का, पानी का टैक्स भरता हूँ या रेंट देता हूँ, तो इस तरह से आप एक डिजिटल आर्किटेक्चर बना सकते हैं। आप उस आदमी के ऊपर एक बेट ले सकते हैं कि इसको हम डिजिटली कितना क्रेडिट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये चीज़ धीरे धीरे करके एक्सटेंड होगी और आप देखेंगे कि नीचे के लेवल पे आएगी। If I am to take you back to how SHGs and the microfinance movement started in India, तो mid 90s to late 90s में I used to be a mid-ranking officer in SIDBI। तो 2 मेथडोलॉजी शुरू हुई। नबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट शुरू किया और सिडबी ने कहा कि साहब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक करना विद बैंक्स इज गोइंग टू बी एन ओनरस टास्क, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे कि माइक्रो फाइनेंस ग्रुप्स बनाइए और लेंड करिए। तो 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की कंपीटिंग मेथडोलॉजीज थी और बड़ी कोलिजन कोर्स पर रहती थी। गिरजा यूज्ड टू बी इन नबार्ड एंड आई यूज्ड टू बी इन सिडबी दोस डेज। तो आज की तारीख में अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की आउटस्टैंडिंग करीब $35 बिलियन की है, ठीक है, लगभग 2.25 लाख करोड़ पकड़ लीजिए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो आउटस्टैंडिंग है, जो नबार्ड से फिर सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर हुए टू NRLM एंड SRLM, वो लगभग इससे आधे पे हैं, करीब $18 बिलियन पे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि माइक्रो फाइनेंस थ्रू दी माइक्रो फाइनेंस 5 विमेन ग्रुप, क्योंकि विमेन कॉमन है लगभग। अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में और सेल्फ हेल्प ग्रुप में एटलीस्ट 50% कॉमनैलिटी मिलेगी मेंबर के लेवल पे, है ना। वही मेंबर है बैठती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वही मेंबर है बैठती है माइक्रो फाइनेंस में। व्हाई इज इट देन वी स्ट्रगल विद द सेम बैंक? वही बैंक पैसा दे रही है MFIs को, MFIs के पास अपना पैसा नहीं है, बैंक से ही पैसा ले रही है। हम लोग यही बोलते हैं बड़ा पैसा लिया छोटा पैसा दिया, दैट्स व्हाट द मॉडल इज अबाउट। So why is it that we struggle so much on the self-help group side of things, but इधर पैसा की भरमार है? मतलब ये हालत होती है कि मार्च के महीने में बैंकर्स पीछे पीछे होते हैं और MFIs आगे आगे कि नहीं और नहीं चाहिए, अभी मत दीजिए, अभी बहुत लिक्विडिटी है, अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, है ना। और कहीं ना कहीं इसका जवाब जो है कि हमने बेटर स्ट्रक्चर्स माइक्रो फाइनेंस में बना लिए एज कम्पेयर टू व्हाट वी कुड क्रिएट इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आज की तारीख में अगर हम एक महिला ने पिछले 5, 7, 10 लोन साइकिल्स में भी फुल रीपेमेंट किया है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि क्रेडिट ब्यूरो पे जाएं और कहें कि इस महिला ने इसका क्रेडिट ब्यूरो से क्या रिकॉर्ड है, क्या इसने कभी डिफॉल्ट किया है। माइक्रो फाइनेंस में चीज़ें वहाँ से शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एट अ लार्जर मैक्रो लेवल हमें इवन फॉर SRLM प्रोग्राम्स देखना होगा कि इस महिला का डिजिटल फुटप्रिंट हम कैसे बनाएं, है ना। हाउ डू वी क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ डिजिटल फुटप्रिंट फॉर दिस वुमन, बिकॉज आने वाले समय में, आज के समय में भी, बट आने वाले समय में ये डिजिटल फुटप्रिंट और इम्पोर्टेंट होता जाएगा, है ना। हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि जिसका डिजिटल फुटप्रिंट है ही नहीं उसको सर्विसेज लेने में तकलीफ आएगी, और इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, है ना।
अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार का ही अगर इनिशिएटिव्स हम देखें तो ONDC के बारे में आप सुनते होंगे, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसमें एक अमेजॉन टाइप का प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनवा रही है, जिसमें वो कह रही है कि कोई भी अगर सामान बेचना चाहे तो ONDC पे इट कैन कम इन एंड ट्राई एंड सेल दैट प्रोडक्ट, है ना। और उन्होंने एक कैप लगा दी है, 3% से ज़्यादा कमीशन नहीं होगी एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाउ डू वी लेवरेज सच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि जो SHG की महिलाएं हैं वो इनका लाभ उठा सकें। सिमिलरली अनदर वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी गेम चेंजर रहेगा विच इज़ दी ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क में लार्जली हम ये बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने जो भी क्रेडिट इसकी हिस्ट्री रही है, क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री, उसको हम एग्रीगेट कर देंगे एक प्लेटफॉर्म पे। तो अगर किसी को भी लेंड करना है, उसको लोन देना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म से चेक करना है कि इसका क्या क्रेडिट रिकॉर्ड रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके एक डिजिटल फुटप्रिंट बनता जाएगा, और अगर हम उस फुटप्रिंट को नहीं कैच करेंगे तो वी विल बी इन द सिचुएशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ डिजिटल डिवाइड, यानी कि जो हमारी महिलाएं होंगी उनके पास ये सुविधा या ये फुटप्रिंट नहीं मिलेगा। दूसरा ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्रेडिट और सेविंग्स प्रोडक्ट, हाउ डू वी गेट बेटर प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट। तो क्रेडिट की काफ़ी बात हुई है, क्रेडिट लिंकेजेस की काफ़ी बात हुई है। मैं थोड़ा सा SHG का जो एक USP रहा है विच इज सेविंग्स, उस पर भी आई वुड लाइक टू वे इन कि भाई हाउ डू वी इंश्योर कि विमेन हैव एक्सेस टू सेविंग्स प्रोडक्ट। अगर आप देखेंगे तो एक डिफंक्ट कंपनी है, थोड़ा चोर टाइप का कंपनी भी है, सहारा, है ना, बट उनका सबसे बढ़िया प्रोडक्ट क्या था, 10 रुपया रोज जमा कर दीजिए, है ना, 10 रुपया रोज, 300 रुपया महीना, 3600 रुपया साल। इट वॉज अ किलर प्रोडक्ट, रिक्शा वालों से पैसा लेते थे। हमारे पास वो सुविधा है कि हम ये प्रोडक्ट थ्रू द SHG मॉडल हम रोल आउट कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम BC एजेंट्स, BC सखी पे ध्यान दें। वन ऑफ द की चैलेंजेस विद सेविंग्स इज कि आदमी के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक है कि अगर 500 रुपया नहीं होगा तो 500 रुपये से कम सेव करना तो बैंक में फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि जो हमने प्लेन्स में भी रिसर्च करी थी तो हमने ये पाया कि अगर एक आदमी को बैंक जाना है और पैसे जमा कराने या निकालना है तो उसको करीब 20 से 25 रुपया खर्चा होता है। तो अगर आप 20 से 25 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो आप 100 रुपये तो जमा कराने जाएंगे नहीं, उसका 1/4 पैसा तो आने जाने में लग गया। तो देयर इज अ मेंटल मार्क कि ये 500 रुपया हो तब तो फायदा है जाने में, बैंक में, निकालने में या जमा करने में। तो समवेयर वी इफ वी कैन ब्रेक दैट कि नहीं आप 20 रुपये भी जमा कराइए और आप ये BC सखी पे जमा कराइए। BC सखी पे एडवांटेज क्लाइंट का भी है कि कम ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। आज की तारीख में अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करें कि उत्तराखंड में मतलब आप 5-7 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में चल के जाओ और बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस करो तो वो मुश्किल होगा। उसके पास थोड़ा पैसा है, वो पैसा कैश में है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू द बैंक। सो हाउ डू वी क्रिएट अ BC सखी नेटवर्क जिससे कि वो सर्विसेज उसके पास पहुंचे। दूसरा जो चैलेंज है कि क्लाइंट के लिए तो मुश्किल है ही है बैंकिंग सर्विसेज तक जाना, बैंक के लिए भी वो सर्विसेज देना बहुत मुश्किल है। इन द सेंस कि एक बैंक में जब कोई आदमी पैसा निकालने या जमा कराने जाता है, मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो जब आप बैंक में जाते हैं तो करीब बैंक की कॉस्ट आती है करीब 200 रुपया, है ना, ऑन एन एवरेज। अगर कोई भी आदमी पैसा टेलर पे जमा कराया निकालेगा, बैंक का कॉस्ट, बैंक के टेलर की सैलरी, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, इंटरनेट, बैंक की कॉस्ट करीब 200 रुपये पर ट्रांजैक्शन आ जाती है। अगर यही चीज़ आप ATM पे ले आइए तो ये कॉस्ट घट के 20 से 25 रुपये हो जाती है पर ट्रांजैक्शन, है ना। और यही चीज़ जब बैंक BC पे ले जाता है तो इसकी कॉस्ट घट के 2 रुपया हो जाती है। तो BC इज अ मॉडल विच वर्क्स फॉर बैंक्स, और वो उस महिला के लिए या उस गरीब आदमी के लिए भी काम करता है। तो इट्स समथिंग दैट वी शुड रियली फोकस ऑन। यूपी ने अभी 58,000 BC सखीज अपॉइंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर ग्राम पंचायत में एक BC सखी बैठाएंगे। वी कैन टेक अ कॉल ऑन दैट। आई मीन आपको ज़्यादा पता है लोकल ज्योग्राफी, टोपोग्राफी का, और हम एक नंबर वर्कआउट कर सकते हैं कि भाई कितनी BC सखी चाहिए होंगी सैचुरेट करने के लिए डिलीवरी चैनल। बट हमें प्रोडक्ट्स पे किस तरह की प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि गरीब महिला के लिए काम करें इन अ वेरी रूरल, वेरी रिमोट
एंड अ वेरी हिली कॉन्टेक्स्ट, आई थिंक उस पर हम काम कर सकते हैं। दूसरा चैनल पे काम कर सकते हैं। चैनल जब तक दूर रहेगा सेविंग्स की तो सवाल नहीं उठता है। लोन अगर थोड़ा वॉल्यूम्स रहेंगे तो कोशिश करी जा सकती है। तो हाउ डू वी ऑल्सो पुश द फॉरगॉटन हाफ ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज सेविंग्स। इसके अलावा मेरे ख्याल से गुडियाल साहब ने बात भी करी ट्रेनिंग में। आई थिंक हम लोग ट्रेनिंग में थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं कि काफ़ी मॉड्यूल्स हैं जो डिजिटाइज्ड हैं, जो अवेलेबल हैं, उनको हम कैसे लोकल कॉन्टेक्स्ट में और लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें सो दैट वी आर एबल टू क्रिएट एन आउटरीच, है ना। अब लेट अस से कि बीसी सखी या बीसी अपॉइंट हुआ है, उसकी रीट्रेनिंग कैसे करी जाए। हर समय तो संभव नहीं है कि उसको बुलाया जाए, देहरादून में बैठाया जाए, 3 दिन ट्रेनिंग दी जाए। तो हाउ डू वी हैव डिजिटल मॉड्यूल्स जिसमें उससे कहें कि ये मॉड्यूल आप डाउनलोड करेंगे और एक छोटा सा टेस्ट होगा जिससे कि आप ये इंश्योर करें कि आपने वो मॉड्यूल ठीक से पढ़ लिया है। आई थिंक इस तरह के थोड़ा इनोवेटिव मॉडल्स हम लोग ट्राई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स वर्किंग अलोंगसाइड ऑल ऑफ यू, हाउ डू वी बिल्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। कैसे हम इंश्योर करें कि जो स्टेट लेवल संस्थाएं हैं वो सस्टेनेबल हो जाएं और किस तरह से सर्विसेज का और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का फ्लो हो उनके थ्रू, उनके सहयोग से, जिससे कि उनकी सस्टेनेबिलिटी पे हम लोग काम कर सकें। सो दीज विल बी द 4 or 5 एरियाज जहाँ पे हम लोग विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क अलोंगसाइड ऑल ऑफ यू। आप इतना नॉलेज लाते हैं फील्ड का और हम नॉलेज लाएंगे अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बट ऑल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग का ऑपरेशंस हैं अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो कैसे चीज़ें वहाँ चल रही हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी बहुत बढ़िया चलती हैं। आई मीन अफ्रीका इज़ very far ahead of us on digital finance. I think there is lots to learn. India has a very strong microfinance base. I think we have a lot to share with the world when it comes to microfinance. तो उसके लिए हम लोग एक 5-member team position करेंगे within the state setup here, and we would absolutely be delighted to work with all of you. आपसे सीख के और आपके साथ काम करके let us see how best we can push this agenda forward. So thank you very much. Thank you, sir. Now, may I request Girija ma'am to share? Thank you very much, Godiyal sir, for an excellent presentation. And thank you very much, Manoj. Happy to see MicroSave being part of the TA support to UpaSac and also to REAP. I think this project, if we look at 49% of the project financing is expected to come out of the bank and other financial institutions funding. So it is a very, very crucial subcomponent. And also given UpaSac's very credible work in promoting linkages with SHGs and banking institutions, and also with some of the livelihood collectives under the earlier program. This is, we are really supporting UpaSac under this project to move up to the next level. While the SHG financing will continue and scale up, we would really like UpaSac to work more on the enterprise financing side. The most critical aspect is a very strong MIS to track the different financial services. We have provided for some budget, and it is very, very important that we have credible data on individuals and also the different groups which we are working with. Manoj touched upon the point of the credit bureau. I'm quite sure this is not happening for the SHG level data. And if we really look at the report of NABARD and also the CB Mudra loan, Uttarakhand has overall 18% NPA in SHG financing, and private sector banks have 41% NPA for the SHG financing, which is not auguring well.
And the Mudra loan as well, the NPA level is quite high. So, but in spite of all of this, the banks have been supportive of the USRLM and also ILSP. But we need to create good credit history and showcase how the members and others are repaying internally through the CIF and also the bank loan. It would be absolutely important to have credible data. The second aspect which comes out very, very strongly is banks are overall willing. I recently was coordinating the central level coordination committee of NRLM with the CEOs of banks, and overall there are very less complaints about banks not willing. Banks are willing. But then the crucial thing which is coming out very, very strongly is adequate mobilization of the community, adequate mobilization of the SHG of the producer group. Very clear micro investment plan where members are clear how they are going to utilize the loan, and also very strong business plans for the NC as well as the FPOs. So this is what is getting adequate emphasis at various conversations which are happening. So UpaSac, along with the other teams which are working from the REAP and USRLM side, will have to really provide adequate emphasis on the planning aspect for how the loans will be utilized. Then we would be definitely able to mobilize more resources. The preparedness of the community, preparedness of individuals, entrepreneurs is absolutely important. And we would be working with savings, credit and insurance. And the credit we have talked about, but savings is something we would really lay emphasis upon. And Manoj talked about the BC Saki, but we hear there are strong headwinds for that. We need to really work. Banks have not come on board the way they should have, because already they have another system. So to embed BC Saki has been slightly an issue. But we have provided for bank mitras through this project. These are CRPs who will be really provided the last mile linkage between the group and the financial institutions, who will really be working on the investment plans and documentation and other aspects. They could double as BC Sakis. And this is the CADA, which is requiring much more training, capacity building, and a fee-based service provision model we need to develop. And coming to the innovative instruments, I think Godiyal have explained, these are all geared towards the next generation institutions. One is the enterprises which will be coming up, and that would require adequate financing. And banks, when we discussed at the design stage, we're looking for some risk mechanism, but we could still work with the existing one like CGT, MSME, and there is one more credit guarantee which is getting available. But then we need to really have very good MOU with banks and see how the credit guarantee could work. We have provided some, but then we could definitely leverage on whatever is available in the country as well. And we also have a good product which is NRLM is developing with SBI, and it is getting offered in Maharashtra, Odisha, Bihar, and 4-5 states now. And this is an enterprise loan for a woman, and up to 5 lakh, and it would be available between 7 to 7.5, including 2% subvention as a back-ended subsidy. This is a very good product which we could also bring into REAP. Once this is now getting pilot tested, but we could bring in. And also the whole co-financing, which RBI has allowed now, we could work with the NBFCs at a more reasonable price to loan for financing the MSME. So UpaSac capability building
not only for the SHG, which is a normal and well tested, well this thing. We need to move beyond and really move to the enterprise lending, which is very critical. And in the FPO space as well, we have around 95 FPOs, but there are more players which are coming in. Kotak Bank has developed a good product. They are looking forward to partnering with the well-developed this thing. This is available at 7.5%, reasonably priced. So also Bank of Baroda and SBI, apart from Samunati and Avanti is another NBFC which is coming in. So we need to really create good partnerships for the FPOs as well. So overall, I think there were some queries from the project director, which had also been clarified. The producer groups under NRLM, they are not expected to have a financial services role. But that is something which we could definitely take up, because they expect SFGs to do the financial services but not PGs. But going forward, if we find there is a strong case, we could definitely look at how we facilitate that. And this is definitely much more challenging than what UpaSac has done. And with the technical assistance and also a lot of capacity building which we are providing for, we are very sure UpaSac will be able to mobilize the 49% required, if not beyond, from the banking system. Thank you very much and all the very best. Do I have the permission, ma'am? Thank you so much. एक्चुअली मैम मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि गिरिजा मैम भी मेरे पॉइंट को ज़रूर सुनेंगे और थोड़ा सा एड्रेस करना चाहेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो हुआ था फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर गोदियाल सर का, और जो उसके बाद में हमारे लर्नेड स्पीकर ने माइक्रो फाइनेंस और बाकी पॉइंट्स पर जो इंटरप्रिटेशन किया, उसमें मुझे 2-3 पॉइंट्स को रेज करना है। सबसे पहला है मैम माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। आप क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं माइक्रो फाइनेंस के फील्ड में, मैं थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि NRLM में वर्क करने के दौरान हमको बहुत सारे ये चीज़ फेस करना पड़ता है कि जब माइक्रो फाइनेंस से फाइनेंस होता है SHGs का, कोई SHG का मेंबर है, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस से कुछ लोन लिया है, उसको उन्होंने रीपे भी कर दिया, लेकिन जब वो बैंक के पास में CCL के लिए जाते हैं तो बैंक उसको CCL नहीं करता है। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, आई कैन कोट देम, और लाइफ स्टोरीज हैं। तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने माइक्रो फाइनेंस से लोन लिया हुआ है, हम इनको नहीं देंगे अनलेस दे रिटर्न दैट लोन। कुछ केसेस में ये होता है कि उन्होंने रीपे भी कर दिया है वो माइक्रो फाइनेंस का लोन, उसके बाद भी उनको नहीं होता है। फिर डिफ़ॉल्टर्स की तो बात ही क्या करनी है, अगर कोई ज़रा सा भी डिफ़ॉल्टर हो गया माइक्रो फाइनेंस के लेवल पर तो वो तो बैंक की लिस्ट ऑफ बेनिफिशरी से हमेशा के लिए आउट हो जाता है। एक पॉइंट है जिसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इन ग्राउंड SHG मेंबर्स आर सफरिंग ड्यू टू दिस lacuna. One point. Second was regarding the point on NPA. बताया गया कि वैसे NPA का जो परसेंटेज है वो 18% है SHG फाइनेंसिंग के उसमें, और 48% है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसको अगर हम देखें उसमें भी ये हाईलाइट किया गया कि जो मुद्रा के जो 8.1%, ये बताया गया कि जो मुद्रा के लोन्स हैं उन लोन्स की वजह से ये NPA ज़्यादा हो रहा है बैंक्स में। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई authorized and verified data है to show how many of these मुद्रा लोन beneficiaries are actually SHG members? क्योंकि एक्चुअल में जो मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं उसकी मेजॉरिटी जो है वो SHG members के beneficiaries नहीं होते हैं। We are struggling to ensure कि हमारे potentially जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं SHGs में, उनको बैंक्स मुद्रा लोन्स दें, लेकिन बैंक्स उनको नहीं मानते अपने बेनिफिशरीज एट लार्ज, जिसको मैं कहूँगी जो उनको लेना चाहिए, जबकि उनके पास में रेडी एट हैंड इन्फॉर्मेशन है। एक SHG की बहुत अच्छी साख है, उसकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, एक CLF है, एक VO स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है एट द बैक ऑफ दैट SHG मेंबर, लेकिन इसके बाद भी क्या वो रीजंस हैं कि banks they shy away from giving mudra loans to SHG members? I have several examples to quote. I do not have time to present them here.
If I'm given an opportunity, I can put it at appropriate level at the right time. I have referred several SHG members to bank. Please give mudra loan to this lady. She is an enterprising woman. She will use this loan for benefit of her own family as well as the progress of the group. Bank did not give her mudra loan. उसको बहुत उलझाया गया, उसको एड्रेस भी नहीं किया गया. कौन से बेनिफिशियरीज हैं जो मुद्रा लोन लेते हैं और जिनकी वजह से हमारा एनपीए का परसेंटेज हाई हुआ है, और एनपीए का परसेंटेज हाई होने की वजह से उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एडआरएलएम पर पड़ रहा है वो ये है कि बैंक्स साइट दिस एनपीए परसेंटेज एंड देन दे शाई अवे फ्रॉम गिविंग लोन टू एसएचजी मेंबर्स. व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? ये जो हमारा वो है क्या कहना चाहिए उसे, पैराडॉक्स है, या मैं कहूँगी कि ये दोनों एक दूसरे से विपरीत स्टेटमेंट्स हैं. बैंक्स उनको नहीं देते हैं जो पोटेंशियल हैं, जो वापस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ एनपीए क्योंकि बढ़ जाता है ऐसे लोगों की वजह से जिनको गलत लिया गया लोन, फिर वो उसका नुकसान एसएचजीज को उठाना पड़ता है. बिकॉज गोदियाल सर इज वेरी वेल अवेयर. मैं उनसे लगातार बात करती हूँ अबाउट द इश्यूज विद बैंक्स, एंड रियली वी हैव इश्यूज विद बैंक्स. Then they do not give loans to SHGs at the right time. I do not know how we would be able to address this issue in REIT. But मुझे लगता है REIT में मैम हम एड्रेस कर पाएंगे, बिकॉज बताया गया कि उसमें एक सेपरेट मैकेनिज्म रखा गया है, एक सेफ्टी रखा गया है एक फंड के रूप में कि जो एनपीए हो जाएंगे उसको रीइंबर्स करने के लिए दैट फंड विल बी यूटिलाइज्ड. बट हाउ एनआरएलएम को हम कैसे मैनेज करेंगे, ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करने के लिए. नंबर 3 पॉइंट, हमारे लर्निंग स्पीकर ने बताया था कि बैंक्स को एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को वो करने के लिए, हैंडल करने के लिए एट द बैंक लेवल कॉस्ट जो है 200 रुपये आता है, एटीएम लेवल पर 20 रुपये आता है और बीसी लेवल पर 2 रुपये आता है. जब बैंक्स को पता है कि उनकी कॉस्ट इतनी कम डाउन होती जा रही है, वाई दे आर नॉट गोइंग फॉर द लोएस्ट कॉस्ट मैकेनिज्म. वी हैव बीन पुटिंग दिस पॉइंट इन सेवरल DLRCs कि हमारे एसएचजी मेंबर्स में से बहुत सारे एलिजिबल हैं, दे आर क्वालिफाइड इनफ टू वर्क एज बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, एज बीसी सखीज. व्हाई डोंट बैंक्स, जहां पर उनके ऐसे एरियाज हैं कि बहुत दूर तक कोई दूसरा बैंक ब्रांच नहीं है. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव वन एग्जांपल फ्रॉम हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, बहादुराबाद ब्लॉक में एक बैंक है पीएनबी धनौरी. पीएनबी धनौरी जिन गाँव को केटर करता है वो बहुत दूर तक फैले हुए गाँव हैं. वहां से एसएचजी मेंबर को गाँव बैंक तक आने में बहुत समय लगता है मैम. लेकिन हम कहते हैं पेपर्स पर हम कहते हैं कि विद इन द विसिनिटी ऑफ 5 किलोमीटर्स देयर इज अ बैंक. एक्चुअली देयर इज नॉट अ बैंक. हर जगह पर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप हमारे एसएचजी मेंबर्स में से क्यों ना हमारे एलिजिबल एसएचजी मेंबर्स को आप बीसी सखी के रूप में हायर करते हैं, यूज करते हैं, उनकी सर्विसेज क्यों नहीं देते हैं. बैंक्स आर शाइंग अवे फ्रॉम टेकिंग दिस फैसिलिटी. और दूसरी तरफ हमारे इश्यूज हैं. तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो विरोधाभासी हमारी चीजें हैं, इनको प्लीज एड्रेस किया जाए. थैंक यू सो मच. ये जो एमएफआई से जो बोरोइंग हुई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैंक इज नॉट विलिंग टू लेंड, क्योंकि आरबीआई का गाइडलाइंस है एक मेंबर कितने ग्रुप में हो सकते हैं और मैक्सिमम लिमिट कितना ले सकते हैं लोन, एंड वो तो पालन करना पड़ेगा. तो अगर ये मेंबर ने 2 और एमएफआई में है और उस सीमा तक लोन ली है, देन इट विल बी डिफिकल्ट. मगर ये ज्यादातर आपको नॉट इन हिली रीजन, मोर इन द प्लेन रीजन ओनली यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम. But whatever RBI guidelines are there, that needs to be followed, and the bank will need to follow them. So we need to really ensure that whichever loans the member is taking, she is repaying properly. And if SHG is something which is doing well, and adequate financing is happening, fair. There is also a tendency to borrow more from MFI. So we, as a project, we need to be careful. Over indebtedness नहीं होना चाहिए. ये शायद आपका 3 the plain districts में हो रहा होगा. As far as the mudra is concerned, once we have a good MIS in place, we could definitely showcase
the SHG member who is deciding to take a loan, what kind of a credit history is there, what kind of savings related products which she is savings she is doing within the SHG, how regular she is, and also more importantly this thing which Manoj talked about. More than these aspects, even other aspects related to the data points on the credit worthiness of a member, we could definitely do as and when we do more of digital level, data capturing. All this is possible, and we are very sure. You also know how banks classify certain loans as mudra loans. It is not as if it is a mudra loan. That the minute some loans are given to SHG for certain purposes, they are classified. Okay, and this is for SHG as well as outside, and this is where we need to really work along with the bank to showcase our data on the credit worthiness and ensure adequate credit linkage. Bank branch being for us, yes, there are places where this would be there, and that is where the CIF mechanism, Community Investment Fund mechanism from the USRLM is so critical to provide financing for the groups, particularly which are far away from the banks. So we could map which are those groups which are far away and somewhat difficult to link, and we could work on a priority basis. You could develop guidelines for utilization of the CIF for these groups. And we have provided the Bank Mitra. So for Bank Mitra as well, this will be slightly far away, but they could be a bridge between the group and the bank, where the linkages could happen much more than before. But we find the utilization of CIF will be more appropriate for these far-off groups. If your question is that if one member of the group has taken loan from the microfinance company and has not repaid the loan and now intending to be financed from banks, being one member of the group, and in that case banks are not extending financing, in that respect my saying is that RBI's clear-cut instructions are there that if suppose one member of the group has defaulted loan of any institutions or even the same bank, the whole group can't be denied loan by the bankers. And if it is a case of any SHG or pertaining to you, please refer that case to us so that we may take up the matter with the SLBC at higher level. Thank you. There is a question from Lorna. Can we work to encourage banks and MFIs to lend against cash flows, or are they already doing it? Yeah, but I know this is already well-established practice among some of the MFIs and also some of the specialized institutions like Samunati, but not widely practiced. This is something which we would be working for MSME and FPO financing, Lorna. I'm Sanjana Mohanty from Seva Bharat. My question regarding this session is just very simple. I know there's a lot to be done in financial inclusion, but a challenge that we have seen across the different states in which Seva Bharat works with grassroots women from the informal economy is the lack of gender sensitization at the levels of the bank. I agree that the CEOs and the higher management of banks definitely want to invest and support these women, but bank managers and the people who are actually delivering those loans to them, they take their applications, they don't take them seriously. We've seen this with so many of our members. This is not just Uttarakhand but other states as well. So is a part, I'm just asking, under the financial inclusion bit, do you have a component of gender sensitization with banks? Because without that, I am unsure whether you can keep hoping that they will keep giving these banks, but it is a fact that grassroots women are not identified or recognized as business women. They are not given that darja. Without that darja, it won't happen. So it's a very important aspect. Yeah, thank you very much for that very, very important aspect. Under this project, there is going to be training programs for bankers at different levels.
and the training curriculum which are well established, so we will be looking at, and then including additional aspects. I'm quite sure Godiyal Sahib is there. We would definitely include the gender related aspects, few sessions into each of the training program for the bankers. The banks themselves bear the cost. We only support in the training curriculum modification, but this is something very important we would need to take care. Thank you. सर नमस्कार, एक क्वेश्चन मेरा भी है, एक सुझाव। मैं धनंजय प्रसाद भट्ट, फाइनेंस कोऑर्डिनेटर उपासक पौड़ीगढ़ है। जैसे कि हम अभी कल से भी सुन रहे हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं कि बैंक फाइनेंस में उपासक की अहम भूमिका होगी और बैंक का इसमें मेन रोल है, क्योंकि वित्तीय संस्थान बैंक है और बैंक ने जो है हमने तो बैंक के साथ फैसिलिटेशन करके लोन करवाना है। बैंक जहाँ तक एसएचजी की बात कर रहे हैं, हम सी शेयर टर्म लोन जो भी बैंक से फाइनेंस करवाते हैं, बैंक के नॉर्म्स को पूरा करते हुए फाइनेंस तो करवा लेते हैं। जहाँ तक रिपेमेंट की बात आती है, वहाँ पर बैंक जो है 10 बार सोचता है और घबराता है कि हमने फाइनेंस तो कर दिया, लेकिन रिपेमेंट में हमें थोड़ा सा बैंक के साथ एक लिखित दस्तावेज अनुबंध करना होगा, क्योंकि हम लोग फील्ड में फेस करते हैं कि कई ब्रांच मैनेजर से ये कहते हैं कि साहब हमने फाइनेंस तो कर दिया, रिपेमेंट कौन करेगा। जैसे हमारे में हिली एरिया की बात करें, हमारी ब्रांच से और गांव की दूरी लगभग 18 से 15 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस हो जाता है। ब्रांच मैनेजर उतनी दूर तक जा नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग माबिंग महाराष्ट्र में भी गए थे, वहाँ पर भी एक बैंक के और जो है एक हमारी जो एलसीज के बीच में एक अनुबंध था, जिससे कि रिपेमेंट की जो है गारंटी कौन देते हैं, एलसी देती थी, जिससे कि बैंक विश्वास में रहता है। थैंक यू। हम लोगों ने ड्रीप के अंदर बैंक मित्रा का सीआरपी लेवल लिंकेज बिटवीन एलसी बैंक एंड द ग्रुप रखा गया। इन लोगों को you need to choose them well, train them well, and also how do we capacitate them to be the link. Repayment follow-up will be that of Bank Mitra. So we have already provided for this. Thank you. थैंक यू मैम। तो हम अब आज के सेशन के एंड में आ गए हैं। मैं 2 मिनट आपके लूँगा। ये एक पिक्चर मैंने शेयर की है, तो कोई गेस्ट है, कोई बता सकता है ये क्या हो रहा है? कोई भी? शेट्टी सर? अच्छा, मुझे लगता है अभी हम लोग ये जो वर्कशॉप थी उससे कुछ कोरिलेट करेंगे। ऐसा है, कुछ कोरिलेशन है इससे? चलिए, तब तो आप लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जरा आगे दिखाइएगा। नेक्स्ट, ये है, इससे कोई लेना देना नहीं था हमारी वर्कशॉप का। मैं ये देखना चाह रहा था कि कितने एंगेज हैं हमारे यहाँ पे सारे लोग। तो अभी हम लोग मैम बहुत अच्छा हमारा वर्कशॉप भी चल रहा है, सारे लोग एंगेज हैं, कोई और उससे बाहर कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। ये दिखाने का मेरा अर्थ सिर्फ ये है कि अब हमको ये करना है, पार्टी करनी है। तो हमने 2 जगह, चूंकि कल बारिश हो रही थी बाहर, इसलिए 2 जगह पे खाने का इंतजाम किया है। जो हमारे डिग्निटीज हैं और गेस्ट हैं राउंड टेबल्स पे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कैफे में उनके लिए इंतजाम किया गया है, और रेस्ट जो पीपल्स हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, उनके लिए इसी के नीचे बेसमेंट में है। इस तरफ से भी दरवाजा है, इधर से भी जा सकते हैं। तो आप सभी इसी के लिए आमंत्रित हैं। थैंक यू।